हेलो फ्रेंड्स, चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड गुड सेफ। सो जैसे आपको मालूम है, कल रात को दैट इज़ सितंबर 20th 10:30 PM हमको iOS 15 अपडेट मिल गया। सो द फ़ोन आई एम यूजिंग इज़ iPhone 12 Pro Max, ओके, एंड अराउंड 3 पॉइंट समथिंग GB का था अपडेट। 10:30 को एग्जैक्टली इट वॉज पुश्ड ऑन टू आवर फोन्स। सो फर्स्ट थिंग इज आई विल शो यू हाउ डू यू अपडेट। अगर आपका फ़ोन एलिजिबल है तो जाइए सेटिंग्स, जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड हियर यू विल सी iOS 15 पॉपअप कमिंग इन। इफ सो सिंस ये मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, सो यू कैन सी iOS 15 iOS इज़ अप टू डेट. Okay, so that's all about the update or on how to do the update. Okay, so going back, so I will go through some things which you can obviously notice while doing this update. So very first thing, when I did the update and I went to settings, I see the screen is more naturally and काफ़ी well aligned है. So आप देखेंगे साइड में both left and right there is small padding जो पिछले बार iOS 14 में नहीं थी. सो दिस थोड़ा सा उसको और अच्छे से अरेंज नाइसली दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस. ओके, एंड इवन द फॉन्ट समहाउ आई फील दैट इट्स लिटिल बिट मोर नाइसर टू लुक. ठीक है, दैट इज़ वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ द लाइव टेक्स्ट. सो नाउ इफ़ यू ओपन फोटोज़, सो दिस इज़ वन फोटो आई हैव ओपन. आपको एक नीचे बटन दिख रहा है, आप उसे क्लिक करेंगे, सो इट विल सेलेक्ट ऑल द सारा लिखा हुआ वो सेलेक्ट कर लेगा, written things, and if you want you can just click on those. See, now you will get multiple options. आपको copy कर सकते हैं, select all कर सकते हैं, lookup कर सकते हैं. If you want to look up in web, see like this it will come, or if you would like to translate it you can do that also, and or directly share the text as well from the photo. So एक चीज़ है, same thing was actually available in Google Photos long back. So if I go to Google Photos and select the same thing, if I press this button at the bottom, see, yeah, you will get the same thing. Select text, you can select this text, see, copy to computer, search. Okay, so same thing was already available in Google Lens, and actually you have some extras also. So see, you can search for visual matches, right? And then even if you want to read it, Google Photos can read that as well for you, which is not available in Apple Photos till now. Okay, so this is about the live text. So now let me go back. So next thing is on the camera. So in the camera also, now you have the same, essentially the same feature available directly. For example, say if I'm putting one box in front of camera, now you see I will get one new icon at the bottom right side. If I click on this, see, it will just select all the things which are written. Okay, and directly you can select this text and same options, copy, you can translate, lookup. So this is good. This is a very nice feature which is made available within camera itself. Okay, so next thing is control center. So आप देखेंगे control center में you have it's little bit more nicely arranged. On top you will see. Okay, so and I feel आप settings में जाएंगे तो the features which they have given here, means the differences on how do you arrange it, that is also very small, but if you are using these things, it's nicely visible. Okay, so for example, if you see that show home controls, access within apps, so things are a little bit differently arranged. Okay, just a slight of visual difference is what I feel. Okay, so other thing you can see is here the background noise, background sounds. So for example, if I click on this, see, directly now if I switch on, so now the rain sound is just playing in the background. Okay, so I can select different sounds. These are all the default sounds what they have here. Balance noise. Okay, and then I can increase or decrease the volume of this, and if you want to switch it off, you can just switch it off. So good thing is, अगर आपको रात में सोते वक्त लाइट with along with your song, or otherwise also आपको लाइट बारिश का साउंड चाहिए, you can directly do it with this button in the control center now here. Okay, that is pretty good thing. Next thing is focus modes. Like you can see here, we have different focus modes now. बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा फीचर है. आप जैसे ऑफिस का काम करते हैं और आप जस्ट वर्क सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड आप क्या कर सकते हैं, आप विद इन वर्क आपको कौन कौन से ऐप लाइक स्काइप यूज़ करते हैं आप ऑफिस में, या आपका ईमेल यूज़ करते हैं, तो जस्ट सेलेक्ट दोस ऐप्स, सो उन्हीं का नोटिफिकेशन आपको आएगा
और दूसरे नोटिफिकेशंस आपको नहीं आएंगे। सेम वीकेंड पे आपको ऑफिस ऐप्स बंद करने हैं तो आप खुद से एक आपका मोड्स आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, सो और बना सकते हैं नया, एंड इन दैट यू कैन कस्टमाइज एंड ऐड द ऐप्स यू वुड लाइक टू सी ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम और डे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सेटिंग्स में जाएंगे, आप देखेंगे फोकस मोड, यहाँ खुद से एक आप कस्टम बना सकते हैं, या ड्राइव करते हुए कौन कौन से ऐप्स आपको नोटिफिकेशन देंगे, ठीक है। एंड देन इवन द सेटअप ऑल्सो आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल से स्लीप, ओके, सो फोकस स्टेटस ऑन होम स्क्रीन में आपको कितने कस्टम पेजेस आपको करने हैं, आपके अभी 4 पेजेस हैं आप, बट ओनली फ्यू ऐप्स विद 1 और 2 पेजेस आपको चाहिए, तो आप जस्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड देन इवन लॉक स्क्रीन आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। So a lot of good things, and basically आपको it's like a, I would say, an advanced version of theme in Windows, right? और आप just select करेंगे and it would help you to pick things which you want at that point of time. आप इसको even आप किसी भी like sleep आप इसको schedule कर सकते हैं from this time to this time, और आप manually इसको start भी कर सकते हैं. So this is another very good thing. Next thing is notifications. So see, the entire look has changed. Okay, so same notification, same goes into a same group. For example, like this, if you see, okay, while I was in do not disturb, these are the 2 notifications I got, so they are all in same group. These are the notifications from before. So okay, so that is very nice, and even the way they are arranged is also more beautiful and more I would say थोड़ा सा और intuitive है, यूज़ करने के लिए हमको और आसानी होगी. Next is spotlight search. Now if you just scroll down, आप मेरे को अपने ऑल फोटोज़ में डॉग का पिक्चर सर्च करना है, सो आई जस्ट हैव टू राइट डॉग, ओके, एंड इट विल ऑटोमेटिकली सी go through my photos and it will show all the dogs I have in my pictures. Okay, so this is very good. Now you can search anything, phone numbers, directly from pictures, okay, from notes, everything will be a single, आप just यहाँ पे लिखिए, it will search through everything and give you the right results. This is very good. Okay, this is one thing which you will miss probably if you are in Android. Next is screenshots. So same, if I tap 3 times in the back, it will take a screenshot, and you have the same feature now extra available. So देखेंगे यहाँ पर, since it has nothing to read, probably that's why I guess, but otherwise what you will see is a small button on the right side. You just click on that, it will select all the words or wordings in this picture. So ये भी काफ़ी अच्छा है. And otherwise the options in this, yeah, you can see here now, copy and scale or select text. आप click करेंगे, so it can select all the, see, you can see all the text in this screenshot also. So otherwise the options mostly remain same, but just little bit of arrangement and थोड़ा सा उसको nicely arrange कर दिया है और सारे options को, ठीक है. Next is wallpapers. So with every release we see something new coming in. So this time if I go and open wallpaper, आप देखेंगे एक दो नए वॉलपेपर हैं, बट रिमेनिंग ऑल आर एसेंशियली सेम फ्रॉम प्रीवियस. सो प्रीवियसली आई थिंक एक थोड़ा सा रेड वाला और एक ब्लू ऑन द टॉप था. इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वन, this one, and then you have got one new this one. Okay, so that is on the wallpaper. So next update is on Safari. So that is also a good update is what I feel. So now you can see all the websites. The way you can search or go to website is on the bottom side. आप नीचे यहाँ पे क्लिक कीजिए. सो गुड थिंग इज़ आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड से आप फ़ोन होल्ड कर रहे हैं, राइट हैंड से होल्ड कर रहे हैं, सो आपको ऊपर रीच आउट करने की ज़रूरत नहीं है. नीचे ही आपको जहाँ जाना है आप जस्ट क्लिक कीजिए और डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड. सो अगर आपको ये पसंद नहीं है तो यू कैन जस्ट चेंज इट डायरेक्टली फ्रॉम द सेटिंग्स एंड मेक दिस सर्च बार अगेन गो बैक ऑन द टॉप. That is the only main change I can notice while seeing this or while using it normally. Next is on the messages. So messages overall I see mostly remain the same, except I think new emojis and then a lot of pictures if they come in groups if someone sends you, but I'm not sure how much useful right now that is in India. If you have a lot of folks sending you through different iPhones, that's a good thing. Otherwise not much, but overall from the look and feel I see it mostly remain the same. Okay, next major update we have got is on FaceTime. Now FaceTime आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऊपर एक ऑप्शन है टू क्रिएट द लिंक. सी यू कैन on your FaceTime link. It's like Zoom. It has become more like Zoom and other apps right now.
The next update is on weather, so that is also a very nice update. So you can see right now I am here in Muatipura, so in Kerala. So you can see the background has arranged based on the current weather conditions here. And आप ये भी देखेंगे कि it has थोड़ा सा और tile based इसको arrange किया है again left and right side padding देकर. So overall visually थोड़ा सा अच्छा लगता है. Air quality is also integrated here. आप देखेंगे air quality, temperature. So lot more information it is giving right now. Air pressure, visibility. So it's very good. It's a complete आपको आपके एरिया का complete all the details in this weather app आपको हाथों हाथ मिल जाएगा with a nice feel. And it has a very good widget also. So another good update is find my iPhone even when it's switched off. So ये एक नया फीचर है जो iOS 15 में ऐड हुआ है. So मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको आप इनेबल कर सकते हैं. So by default it will be enabled, but आपको ढूंढना है तो आप go to settings, find my iPhone, and in that you will see find my network. So you can see in that participating in find my network lets you locate this iPhone even when it's offline and after shutdown. So this is another good feature. I would recommend you to enable this. So आपका फ़ोन अगर शट डाउन है या स्विच ऑफ है तो भी आप उसको ढूंढ सकते हैं, ढूंढ पाएंगे. So next one is on the music app. So music app also I do not see much of big changes except some visually the way again on tile base they have arranged with left padding and some nice picks, but otherwise don't see a major change as such for a normal user. Next is on the performance. So after installing I have used it for like 4 to 5 hours and definitely I can say थोड़ा सा और स्मूथ है compared to, it's not like iOS 14 laggy था. No way it was laggy. It was very good. Okay, and काफ़ी अच्छा response था, but this is even faster. So that's what how I feel. So if I open any app, if I open YouTube Studio, if I open emails, everything is a little bit more either the animation or I don't know how, but things looks to be more seamless in this new after this new update. So I will definitely recommend everyone to go ahead and update as soon as you see iOS 15 popping up in your settings in update center. Okay, so that's all. That's at least the most obvious or natural things I have noticed as a normal user. But there are small. There are more than I think 200 plus changes which this iOS 15 system gives otherwise. Okay, so thank you folks. Thanks you for watching this. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.